थोड़े से साल और दे देंगे, जो कि आपके प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने आपको बात की. Of course, as a successor to Corporate Law Authority, and that's where शमीम अहमद खान साहब, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, इनका बड़ा लीडरशिप का रोल है कि इसको आगे ये कैसे लेकर चले. But now you are a unified regulator for the corporate sector, capital market, NBFIs and the insurance sector. मैं बात कर चुका हूँ कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट की, कि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमने मॉडर्निटी लानी है, एफिशिएंसी लानी है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, तो इट इज़ गोइंग टू कम थ्रू द कैपिटल मार्केट्स एज वी गो फॉरवर्ड. आपका दूसरा जो क्रिटिकल फंक्शन है is being the guardian of public interest and ensuring that markets remain fair, transparent and accountable. और ये बहुत ही एक I would say delicate balancing act है कि how far do you go? You have to do what you need to do to ensure कि इसमें जो fairness और transparency हो, but उस level तक भी ना जाए कि जो industry है वो stifle हो जाए. So I think it's a very delicate balancing act that all of you, along with your commissioners, need to do as a primary regulator. और इसमें जो आपका regulatory framework है, उसमें investor education है, developing new financial projects है, leveraging technology है. और देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ किसी भी transformation में is people, process, technology. So हम technology की बहुत बात करते हैं, and at times we think that is the actual nirvana कि हम हर चीज़ को automate कर दें. But if you have broken processes and if you automate those broken processes, then the whole thing is not going to move forward. तो उस लिहाज से I just want to again acknowledge you and your team कि आपने इतने छोटे और short span of time में आपने जो सारी काविशें की हैं और बड़े important आपने steps लिए हैं to align local markets with international standards. उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने जो reducing IPO timelines, I think that's a fantastic thing because the number of companies which have to now come to the equity capital markets, I think it's absolutely critical. अगर हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है, तो ये जो everything that we are doing on the ECM side is going to be very important. और ये corporate filings at the top of the house, but also in the GEM space as well, is absolutely critical as we go forward. मैं जो आपका strategic plan आपने बनाया है insurance sector का, उसके मुताबिक already बात कर चुका हूँ. Digital transformation, please keep on doing it and keep on going forward. जितनी हम human intervention कम कर सकें, that's about ease of doing business. तो वो आप उस पर ज़रूर उस पर करते जाइए. जो आपका professional clearing member regime and launch of centralized gateway portal for onboarding of investors in capital markets is fantastic. ESG initiatives, I think ये आज से हम इस वक्त बात करते हैं कि हमें $1 billion चाहिए या $500 million चाहिए, $500 million चाहिए. इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की इस्तिताअत है कि the moment sentiment changes, it's only 3 years back that WAPDA did the inaugural green bond. और अगर आपको याद हो तो उस वक्त $500 million की issuance हुई थी. The book size was actually $3 billion, and WAPDA did not decide to exercise the green shoe option. अगर वो $750 million ले जाते, तो इस किस्म की appetite है इस मुल्क पे, इंशाल्लाह as we go back with our ratings, and so वो funding की कभी भी हमारे पास कमी नहीं रही है as the certainty of macroeconomic stability comes back. और उसके अलावा जो आप इनोवेशन को encourage कर रहे हैं through regulatory sandbox, I would suggest that you continue to do that. आपने already legislative reforms पे Deputy Prime Minister की मदद मांगी है, और with respect to SECP Act, मुदारबा Ordinance, Securities and Futures Market Act, Insurance Ordinance, तो इसमें Ministry of Finance से भी हम जो आपको support कर सके वो इंशाल्लाह हम ज़रूर आपको support करेंगे. और देखिए, ये brick and mortar is important because the infrastructure and the environment in which we work, I am a strong believer that is a very, very strong enabler to create the right environment. So once again, जी आकिब साहब, I'm grateful to you कि आपने मुझे आज मदऊ किया, और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि from Ministry of Finance we will continue to provide necessary resources, infrastructure, because by doing that
We are investing in the future for economy and inshallah, therefore the prosperity of Pakistan. बहुत शुक्रिया जी. Thank you.